Hello everyone, how are you? I hope you are very well. You are both welcome on online learning platform of the CPVN, which is best community for the learners. From this platform, we are trying to interact virtually. Okay, so today we are trying to interact on the chemical equation. Alright, chemical equation. What is the chemical equation? Chemical equation is, we need to the symbol of the element, we need to the symbol of the compound, we need to the symbol of, just like we need to the symbol of the chemical reaction. So this symbol is known as chemical equation. For the example, formation of the water from hydrogen and oxygen. कोई भी कहे formation of water from hydrogen and oxygen. This is nothing else, this is the only chemical reaction. Formation of water from hydrogen and oxygen, this is a chemical reaction. Alright, let me इसके लिखेंगे chemical reaction. Alright, this is a chemical reaction. When this chemical reaction represent in the symbol form, this is known as chemical equation. Symbol इसका क्या होगा? Hydrogen plus oxygen and H2. This is a symbol of the reaction, so this is known as chemical equation. Alright, symbol chemical reaction and chemical equation. This is the difference between chemical reaction and chemical equation. Alright, so this is the symbol. Chemical equation is nothing else. This is a symbol of the chemical reaction. Okay. So next part of the chemical equations. Okay. So there are the two parts of the chemical reaction, chemical equation. Sorry. First is the reactants and second is the products. Reactants and products. Okay. Reactants बेटा क्या होता है? This is the originally substance. Okay. We have to take for the observation. We have to take the experiment. The substance we take in the experiment. This is known as reactants, and the new substance form. This is known as products. Okay. So in the reactants and product, we are write a symbol, special symbol. This is known as arrow. Arrow indicate the direction of the reaction. Okay, this reaction is directed from forward direction. Alright, so reactants and products are the two important things of the chemical equation or chemical reactions. And how we will represent it? Chemical reactants are represented in the right hand side and left hand side. Products are represented in the left hand side. This is represented in the left hand side and this is represented in the right hand side. Alright, right hand side and left hand side. Okay, if there are more than one reactants, just like that, इसको मैसेज लिखते हैं P equal to R. R is equal to P. If there are more than two reactants, so there are the written with a plus sign, just like A plus B. If there are more than two products, they are written with a plus sign, C plus D. Alright, C plus D. So this is the symbol of the reaction. This is known as chemical equation. Okay. So now we need to explain how many types of the chemical equation. Types of the chemical equation. Types of the chemical equation. Types of chemical equation. ये टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में स्टडी करते हैं. केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं? राइट, फर्स्ट होता है एटॉमिक इक्वेशन. एटॉमिक में जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट आर रिटन इन द एटॉमिक फॉर्म, नॉट ए मॉलिक्यूल फॉर्म. Just like that, first है atomic equation.
एग्जाम्पल इसका होगा H plus Cl equal to HCl. So this is the atomic equation. Alright, atomic equation में atoms are taken, reactants or products. Okay, second equation है ionic equation. Ionic equation क्या होगा? Ions are taken in the reactants as well as products. H plus ion, Cl minus ion, H plus or Cl minus. This is the ionic reaction, ionic equation. Second, third है molecular equation. Molecules are the taken. Molecular equation. Molecules are the taken. For the example, H2 plus Cl2 equal to twice HCl. In every case, reactants or the products on both sides, molecules are the taken. This is the molecular equation, right? Four type का आता है unbalanced equation. Unbalanced equation. Four type का होता है आपका unbalanced equation. Unbalanced equation H2 plus Cl2 equal to HCl. This is unbalanced equation because the number of atoms in the side of molecule reactants are not equal to the number of atoms in the products. Okay, so this not follow the law of the conservation of energy. Second type of category है आपका balanced chemical equation. Fourth है आपका balanced chemical equation. Okay, जैसे आपका H2 plus Cl2 equal to twice HCl. This is balanced chemical equation because number of atom of the reactant side equal to the number of atom of the product side. So this is the types of chemical reaction: atomic equation, ionic equation, molecular equation, unbalanced equation, and balanced equation. All right. Now we discuss about the significance of chemical equation. What is the significance of chemical equation? Significance is that they inform qualitative information. क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होता है? हमें इस इक्वेशन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? इट्स लाइक देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द इक्वेशन. तो व्हाट इन्फॉर्मेशन दे कन्वे? द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे कन्वे द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन. क्वालिटेटिव मींस they inform about the name of the reactants and name of the products. Okay, state of the reactants and product, order of the reactants and product. All right, so they are the qualitative information. तो फर्स्ट एग्जांपल देते हैं. इसमें क्या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है? रिएक्टेंट्स आपका हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, प्रोडक्ट आपका हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. दिस इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. क्वालिटेटिव में नेम एलिमेंट का पता चलता है, कंपाउंड्स का नेम पता चलता है. सेकेंड इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है? इसको हम बताएंगे. क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ये होती है कि कितना क्वांटिटी में बन रहा है कोई भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स कितने क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, यूज हो रहे हैं, और कितना क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स. अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स है 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन फॉर्म द 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. ऑलराइट, so this is the quantitative information explain the quantity of the element, quantity of the reactants and products. Alright, now we discuss about the balancing of the chemical equation. This is the most important topic and very useful in the whole chemistry. बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन. अगर आपको बैलेंसिंग नहीं पता, यू नो नथिंग एल्स. आपको कुछ नहीं पता. ठीक है, तो यू नो एवरीथिंग इज शुड बी क्लियर अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन. ओके, सो हियर आई एक्सप्लेन देयर आर मेनी पॉइंट्स ऑफ द व्यू ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन. फर्स्ट इज द हीट एंड ट्रायल मेथड. सेकेंड इज द पार्शियल इक्वेशन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन्स मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स एंड एल्जेब्रिक मेथड्स. ऑलराइट, so the important method in your syllabus is the heat and trial method. Partial equation method you will be studying in the class 9. Ion electrons and oxidation number method you will be studying in the 11th. And algebraic methods is useful in the calculation of the calculation in the NEET and JEE examination. Okay, so here we explain the heat and trial methods. Okay, what is the heat and trial method? This is very simple and easy method. So here is one example we explain by the to balance the chemical equation by the heat and trial method. Okay, so first example,
balancing of chemical equation by heat and trial method. Equation by heat and trial method. Heat and trial method. देखिए इसमें टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन होता रहता है. इसमें इजी वे निकाला है, बहुत ही सिंपल पे है. इसमें बहुत से मॉडिफिकेशन है, आपकी बुक में मॉडिफिकेशन है, हम भी कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पर. बट आपको जो अच्छा लगे क्लियर हो वो आप करना, राइट. देखिए पहला हम बेटा एग्जांपल लेते हैं KClO3 का. KClO3 KCl plus 2, right. Potassium chloride, whenever heat it will break into potassium chloride and oxygen, right. तो यहाँ पर बेटा क्या समझने की जरूरत है, पहले हमें एक चीज ध्यान देना है कि इसमें क्या होता है कि जब हमारा एलिमेंट्री गैसेस को हम नोटिस कंसीडर करते हैं. व्हाट आर द एलिमेंट्री गैसेस? जस्ट लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन. दे आर द एलिमेंट्री गैस बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ द एटम. ओके, सो दे आर द एलिमेंट्री गैस, राइट. तो एलिमेंट्री गैस को हम एटॉमिक फॉर्म में चेंज करते हैं. KClO3 KCl plus 2. Okay, to balance the chemical equation. First we need to balance the everything. There are the K1, Cl1 है यहाँ पर 3, 2, 3 है, तो यहाँ पर 3. Now we need to require everything is the balance. And what is the defect? Defect is that oxygen is atomic form. Now it will be changed into the molecular form. 2 KClO3 2 KCl plus 3O3. ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म. अब ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया. ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट द हिट एंड ट्रायल मेथड. We will explain the next topic with the next equation in the next class. Okay, all right. Thank you. God bless you.